Whenever we prepare for an examination, we always look forward to identify those topics from where we can expect the question is surely going to be asked in the examination. और अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन के लिए जिसमें सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, उस एग्जामिनेशन के लिए अगर हमें ये मस्ट नो टॉपिक्स मिल जाए, मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट पता चल जाए, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. सो कीपिंग द सेम इन माइंड, today in this video I will be discussing 3 topics, or rather I would say 3 indices with you, and trust me guys, all these 3 indices will be asked for sure in your RBI Grade B examination. And I would say not only RBI Grade B examination, for that matter all the regulatory bodies exams which you are preparing for, whether it is SEBI, IFSCA, SEBI, PFRDA, यहाँ इस वीडियो से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस. अगर मैं और बताऊं तो अगर आप किसी बैंक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SBI, IBPS, PO और RRB PO, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज की वीडियो में हम करने के वाले, इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रादर आई वुड से 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, then we have digital payment index, and then we'll talk about financial condition index. लेकिन इन तीनों में जो हमारा फ्लो रहने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फोकसिंग ऑन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्योंकि ये लेटेस्ट है. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज FCI, and then we will be concluding our discussion with the financial inclusion index. So I hope you all are ready and you're going to enjoy this discussion. If you want to download the PDF of this particular session, the PDF of this session is available on my Telegram channel, and the link of my Telegram channel is on the screen now. So let's get started. पहला पॉइंट जहां से हम आज के इस डिस्कशन को शुरू करेंगे, that is डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. इफ समवन आस्क मी व्हाट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो मेरा आंसर बड़ा सिंपल होगा कि सर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वो इंडेक्स है which is presented by RBI, and it is an index which is presented twice a year. और ये इंडेक्स हमें बताता है कि how well the digital payment sector is performing in the country. So Reserve Bank of India has introduced DPI in January 2021 which is basically a structure to quantify and monitor the growth, depth and accessibility of digital payment system across the country. याद रखना होगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है क्या, डिग्री टू विच इंडियन सिटीजंस एंड बिजनेसेस दे आर इंटीग्रेटिंग डिजिटल चैनल्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो बेस ईयर है दैट इज मार्च 2018. बेस ईयर का मतलब क्या कि सर अगर आप आज 2025 में और आप जानना चाहते हैं कि हाउ वेल डिजिटल पेमेंट segment is performing in India, then you are keeping 2018 as your base and you're comparing with respect to the same. For example, अगर 2018 का जो स्कोर था that was 100 और आज स्कोर इंक्रीज होकर 150 हो गया, तो इसका मतलब there is a 50% इंक्रीज, यानी कि आपका जो डिजिटल पेमेंट है that is improved by 50% in comparison to, in reference to 2018 डेटा. इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, we use a term that is base year. उसके बाद अगर हम बात करें जो लास्ट ईयर का डेटा था दैट वाज मार्च 2024, इट वाज 445.50. उसके पहले की बात करें तो सितंबर 2023 का 418.77. और अगर मैं बात करूं पिछले 6 महीने की, दैट इज सितंबर 2024 एज वेल एज मार्च 2025, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and relevant data जहां से क्वेश्चन आएगा. दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर योर रेफरेंस, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट. बस मैं चाहता था कि आपके पास स्क्रीन पर ये डेटा हो ताकि आप वो रिफ्लेक्शन देख सके. एंड एज यू सी दिस रिफ्लेक्शन फॉर मार्च 2025 द डेटा इज 493.22, और अगर हम सितंबर 2024 की बात करें तो डेटा वाज 465.33. तो मैं बता दूं दोबारा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हर 6 महीने के लिए प्रेजेंट किया जाता है एट अ लैग ऑफ 4 मंथ्स. लैग ऑफ 4 मंथ्स का मतलब क्या, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इस 6 महीने का जो डेटा था फ्रॉम अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025, इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन जुलाई 2025. तो इफ यू कैन सी देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ्स. इफ यू कैन सी देयर इज अ गैप और देयर इज अ लैग ऑफ 4 मंथ्स. सो आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. तो हमें याद रखना होगा 493.22 और दूसरा हमें याद रखना होगा 465.33. ये सितंबर का डेटा है एंड दिस इज द डेटा फॉर मार्च 2025. अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट्स पे, कंपोनेंट्स की बात करें,
ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इट इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स जो कि 5 क्रिटिकल पैरामीटर्स को इंक्लूड करके कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है किसे, पेमेंट परफॉर्मेंस को। दूसरे नंबर पे वेटेज है पेमेंट एनेबलर के लिए। तीसरे नंबर पे वेटेज है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द सप्लाई साइड। और अगर मैं बात करूं फोर्थ पे, वी हैव पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव द डिमांड साइड, एंड लास्ट इज कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इसके बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। पेमेंट एनेबलर का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, आधार लिंकेज, कि हाउ मच user is capable to do the payment. Then we have demand side, that means how much we are demanding for debit card usage, wallet and prepaid payment instruments. Supply side, we talk about the payment infrastructure available, for example ATM machines, point of sale machines, QR codes, business correspondence and whatnot. अगर मैं पेमेंट परफॉर्मेंस की बात करूं, which has the highest weightage, it is basically the total number and total value of digital transactions, unique users, cash withdrawals, usage frequency. These are the parameters used to identify the status of payment performance. Then we have consumer centric, 5% weightage, talks about public awareness, financial literacy efforts, frauds, transaction delays and whatnot. Now moving on to the next point, if I talk about, these are the 5 parameters as I have already discussed, but इनमें से आपको सबसे पहले याद रखना होगा पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, पेमेंट एनेबलर वेटेज इज 25%, demand side 10%, supply side 15%, and 5% is the weightage given to consumer centric parameter. Moving on to the next point, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप याद रखिएगा, यहां से जो क्वेश्चंस है वो 3 तरह के पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पैरामीटर्स, इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग द वेटेज, और तीसरा क्वेश्चन अभी तक जो हमने कवर किया वो पूछा जाएगा रिगार्डिंग द करंट डेटा, कि एज पर द करंट डेटा what is the value of DPI, that is Digital Payment Index, for March 2025, और maybe उसका comparison पूछ ले September 2024 के साथ। Now I will be moving ahead to add few more important things. This is the trajectory, how it has grown from 2018 to March 2024, and in 6 years there is a growth of around 4.45x, which is marvelous growth, and this growth is because of widespread UPI adoption, rise of fintech startups, as well as गवर्नमेंट एंड आरबीआई बैक डिजिटल इंक्लूजन पॉलिसी, जिसके वजह से ये टारगेट्स, ये ग्रोथ अचीव कर पाया इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है जी। अब अगर मैं अगले पॉइंट पे जाऊं, क्या इंडिया ही एक ऐसा देश है जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स या अपने कंट्री के डिजिटल पेमेंट सिनेरियो को कैलकुलेट करता है? नहीं, यूएस भी करता, यूरोपियन नेशंस भी करती हैं, चाइना भी करता, बट उनके जो इंडेक्सेस हैं या उनके जो मेथड्स हैं, दैट इज नॉट as extensive as that of DPI, because DPI एक multi-layered assessment index है जो कवर करता है परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि और वर्ल्ड में इवन द डेवलप्ड इकोनॉमीज दे आर आल्सो नॉट परफॉर्मिंग द सेम। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है DPI is the indicator of economic digitization, that what is the level of economic digitization, what is the level of cashless economy in the country. Tool for policymakers like RBI and government, it use DPI data as the, I would say, the data so that the policies can be framed. Fintech and banking innovation, depending upon the growth, अगर मैं हूँ, रोज मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि एवरी डे द फिनटेक सेक्टर इज ग्रोइंग, एवरी डे द डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री इज ग्रोइंग, दैट विल somehow boost me to get involved in the same sector, and even it will enhance the consumer behavior. Consumer will also trust the digital payments because of the data which has been presented on regular basis. अगर मैं आज डिजिटल पेमेंट्स नहीं करता, लेकिन जैसे मुझे सुनने में आया कि पूरी दुनिया, पूरा इंडिया डिजिटल पेमेंट कर रहा है, देन आई वुड थिंक ऑफ दैट व्हाई शुड आई लैग बिहाइंड, आई वुड आल्सो गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व। कुछ डेटा है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यूपीआई की अगर मैं बात करूं, 34% था शेयर यूपीआई का इन 2019 इन ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स, विच हैज इंक्रीज टू 83%, अगर मैं अदर पेमेंट सिस्टम्स की बात करूं, सच एज आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इट हैज फेल डाउन फ्रॉम 66 टू 17%। तो एक तरफ यूपीआई का वेटेज बढ़ गया और दूसरी तरफ आपका जो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस है, इनका वेटेज कम हो गया। तो ये दो पॉइंटर्स के डेटाज इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डेटा है आप इसे बस रीड कर लीजिएगा। इट इज रिगार्डिंग दी टोटल नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शंस एंड टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शंस, एंड
it is with the comparison with respect to 2018. ये मैंने आपको दे दिया. If there is a descriptive question in the examination, you can use the same data. ठीक है जी. Moving on to the second इंडेक्स ऑफ द क्लास. सेकेंड इंडेक्स हमारा जो है दैट इज फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स. अब मुझसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स क्या है. फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स इज अ प्रपोजल व्हिच हैज बीन गिवन बाय आरबीआई, जिसमें आरबीआई ने कहा कि वी हैव एन नंबर ऑफ इंडेसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. लेकिन अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, जिसमें वी हैव इक्विटी मार्केट, वी हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, वी हैव फॉरेक्स मार्केट. सो दीज मार्केट्स दे आर प्रीटी वॉलेटाइल and they are changing on regular basis. So in order to identify the status of these markets, we must have a separate index, and that index should be presented on daily basis. This is the proposal given by RBI. जी हाँ, अब RBI ने ये कहा कि एक डेली फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि एक टूल होगा जिसे डिजाइन किया जाएगा in order to track and interpret the health of the financial market of the country, not the entire, I would say, economy, but specifically India's financial market, जो कि help करेगा decision makers को to take a better decision, क्योंकि अब decision में कोई lag नहीं है. DPI डेटा आया मार्च 2025 का और वो भी आया जुलाई में, तो there is a lag, और वो भी जो डेटा है वो रियल टाइम डेटा ही नहीं हो सकता कि आज जुलाई में जो आप ये डेटा पढ़ रहे हैं उसका करंट सिनेरियो काफी चेंज हो गया हो. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, to come up with more, I would say, proactive policies, FCI will be produced, FCI will be presented on daily basis as per the latest approval given by RBI. RBI ने ये भी कहा कि अगर इस इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, which means we have tight financial conditions, जिसका मतलब है क्रेडिट फ्लो आपकी इकोनॉमी में स्लो है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई है, और इन्वेस्टर्स को ध्यान से सोचकर इन्वेस्ट करना जरूरी है. अगर नेगेटिव एफसीआई वैल्यू है, इसका मतलब इंडिया में इजियर फाइनेंशियल कंडीशंस है, चीपर क्रेडिट है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है एंड इंक्रीज रिस्क एपेटाइट. आप इन्वेस्ट कीजिए, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी टू अर्न गुड प्रॉफिट्स. ये जो इंडेक्स है इट विल बी फ्रेम्ड ऑन 20 कोर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, और ये जो 20 कोर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है दैट विल बी बेस्ड ऑन 5 market segments. One is money market, government securities market, equity market, corporate bond market, as well as we have the foreign exchange market. तो money market, government securities market, corporate bond market, equity market and foreign exchange market are the segments जिनको ध्यान में रखते हुए और उनके ऊपर 20 इंडिकेटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को प्रेजेंट किया जाएगा. एंड इट विल बी अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट which will give us a single FCI score, तो इसमें क्या होगा कि सर अलग अलग सेगमेंट्स के भी स्कोर्स प्रेजेंट होंगे और इन अलग अलग सेगमेंट के स्कोर्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्टैंडर्डाइज स्कोर भी प्रेजेंट किया जाएगा, सो दैट यू कैन एनालाइज द हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द कंट्री. जब इस FCI के थॉट्स को इंप्लीमेंट किया गया तो उसमें यह समझ आया कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो टाइटेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की थी जुलाई 2013 में, जब इंडिया का स्कोर बनता था +2.826 बिकॉज ऑफ टेपर टेंट्रम. आई डिस्कस व्हाट इज इट. और इजीएस्ट कंडीशन वाज पोस्ट कोविड, और आई वुड से ड्यूरिंग कोविड-19 massive liquidity infusion which was done by government RBI. That was a time when we had easiest financial conditions, ample of credit available, cheaper credit available, good time to invest in order to earn profits. So अगर negative है इसका मतलब easy है, positive है इसका मतलब tight है. Remember that July and June were the two, I would say, the data which have been shared जहां पे ये toughest देखा गया या easiest देखा गया. अगर मैं टेपर टेंट्रम की बात करूं तो सिंपल भाषा में ये है कि फेडरल रिजर्व्स ने अनाउंस किया था दैट इट विल रिवाइज इट्स पॉलिसी रेट्स. अनाउंस किया था, पॉलिसी रेट्स रिवाइज हुए नहीं थे, अनाउंस किया, और जैसे ही अनाउंस किया उसकी वजह से द फॉरेन इन्वेस्टर्स दे हैव स्टार्टेड disinvesting from the emerging markets and they started investing in US itself in order to overcome, in order to avoid the volatility which may occur because of the policy changes which may be done by the Federal Reserves as per the announcement. Lekin it is termed as tantrum because Federal Reserve said that I will be tapering the policy rates, but undoubtedly it was a tantrum because finally it was not properly executed as it was expected, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में
काफ़ी issues आए, जैसे कि capital flight out from emerging markets. There was a sharp depreciation of emerging market currencies. There was a sudden rise in the bond yield, market volatility and liquidity was tightened, and India was one of the market which has been affected during this condition, and that is the reason we say जो आज तक का हमारा tightest financial condition it has been witnessed in July 2013. What will be the benefit of this daily frequency FCI? Real-time assessment, early warning system, informed monetary policy, transparency and research, and investor confidence will increase as per the given detail. With this, India will set an example for the developed countries like US, Canada, Eurozone, which have their financial health indicators, but they are presented on weekly or monthly basis. But being an emerging market, being a developing nation, India will set a benchmark for the developed nations कि भैया अगर financial health check करनी है अपनी financial market की, you should come on daily frequency index in order to have a much appropriate insight about your financial conditions. Got it, guys? Most important point in this discussion is this financial condition index, जहां से question पूछे जाने के पूरे chances हैं. Then I have a question. You can download the PDF, try to attempt the question, and I will be what I'll do is I'll remove the answers. You do one thing, you take the screenshot after watching the entire video, try to attempt the question, and if you have any doubt you can ask me in the comment section itself. After this I will be moving on to the last index of my video, and the last index of my video is financial inclusion index. Before I start, financial inclusion basically means including more and more public with the financial sector of the country, providing them access to the financial services, affordable financial services, and available financial services. So I generally take it in this manner that financial inclusion is a combination of two A's: accessibility, making the financial services accessible to the public, making the financial services affordable for the public, and making the financial services available to the public so that they can enjoy it, and it will lead to financial inclusion in the country. RBI has introduced the financial inclusion index in the same year as that of DPI in 2021, and it was first presented in August 2021. But unlike DPI, in case of financial inclusion index, we don't have any base year because it is not a comparative value, it is an absolute value. What I mean with the term absolute value, it basically means कि अगर आपकी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से 40 इंडिविजुअल्स हैं, एडल्ट्स हैं out of 100 who have been connected with the financial sector, they have access to the financial sector. So 40 out of 100, which means 40% is the financial inclusion, and the score is going to be 40. So score 40 का मतलब क्या हुआ कि सर out of 0 to 100, 0 is 100% financial exclusion, 100 score means 100% financial inclusion, and 40 means 40% of the population or 40% of the adult population is included with the financial sector. Financial sector does not mean only and only banking sector. It also includes the discussion on, or it also includes the banking services, insurance services, even the investment services which should be available. This index is also calculated on the parameters, but here we have 3 parameters, unlike DPI possessing 5, unlike financial condition index where we had 20 core indicators for 5 market segments. Here we have 3 parameters: access, usage, and quality. Highest weightage is for usage, 45%, access is 35%, and last, quality we have is 20%. Now, I have further classified these 3 parameters in much detail. So access 35%, it talks about the supply side, how much the supply of financial infrastructure is available. For example, banking, NBFCs, post offices, then digital, UPI, mobile wallets, insurance services, and pension. So it talks about banking, digital, insurance, and pension are the 4 dimensions, and it is calculated on 26 indicators. For example, number of saving accounts, business correspondent outlets, number of ATMs in a region. On that particular basis, access related financial inclusion index calculation is done.
Then in case of usage, we have 5 dimensions: saving and investment, credit, digital, insurance, pension. Here we talk about what? We talk about demand side. And last, very important, quality, financial literacy, how well public is aware of the financial services which are being provided, consumer protection, what are the initiatives have been taken for consumer protection, and last but not the least is the inequality part, that what is the regional or district wise gaps in the financial services. So in total we have 9 indicators over here, 52 here, 26 here, which comes out to be total 97 indicators, out of which 90 indicators are primary and 7 indicators are inequality indicators, which help us to identify the inequality on region wise basis or district wise basis. So as I said, it's a absolute value, and if it is an absolute value, it do not require any kind of base year. So no base year is there. Gini's based inequality tracking is done. Then sectoral consultation is also important, and forward looking index has been we can say it is a forward-looking index because it emphasizes on real, sustained use and awareness, not just excess. So excess ke saath usage plus quality, these are the 2 important areas. Now, if I talk about the current data, firstly, financial inclusion index is an annual index. It is presented on yearly basis. That means April to March ka data present kiya jata, again with a lag of 4 months, generally in July of every year. इस बार जो डेटा प्रेजेंट किया गया, दैट इज टिल मार्च 2025, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द स्कोर इज 67, which was 64.2 in March 2024. अगर हम बात करें, दिस improvement is not because of excess, because when back in 2021 when financial inclusion index was initiated, तब भी जो excess part था, जो supply side थी, that was already around 70, or it was close to a score of 70. But usage and quality was pretty low, and over the period of time, in past few years, usage and quality score has been improved, because of which the overall financial inclusion index score has improved. Got it? Now, what are the reasons because of which we have witnessed a great jump in the financial inclusion? So that is because of n number of initiatives taken by government. One is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, UPI, digital payment revolution, then direct benefit transfer, microfinance and self-help groups for women's, PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM Suraksha Bima Yojana, PM Pension, Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These all are the initiatives which have been taken by the government, which has boosted the financial inclusion in the economy. Why it is important? Because it is important for policymakers, it is important for citizens, so that citizens can get that financial empowerment, which will reduce income inequality, and it will increase the dependency on, I would say, dependency on formal financial sector of the economy. And in real world, it will help the workers, it will help the businessman, it will help the service providers to transfer the funds to enjoy the services all around the country. Conclude agar मैं करूँ, summary में 67 data is very important. Key improvement is usage and quality, not excess. Their weightages are important, total indicators are important. First published 2021, which organization publishes it? RBI. 67, अगर आप याद रख सके ज़्यादा से ज़्यादा 64.2, मार्च 2021 का सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आप कर पाओ तो ठीक, ना कर पाओ इट्स ओके. एंड रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ कंपैरेटिव डेटा, सॉरी, इट इज नॉट अ relative data, it is an absolute data which is scored out of 0 to 100. ठीक है जी. Then I have 2 more questions for you from Financial Inclusion Index. So you can take a screenshot and you can type the answers of these 2 questions in the comment section, and I will be sharing the correct answers once 10 plus comments have been received. So that is all, and trust me guys, you will be getting at least 2 to 3 questions in most of the examinations in the upcoming financial year from this video itself. Along with that, if you're preparing for RBI Grade B examination and you want a platform on which you can trust and you can ensure your selection in the very first attempt, then do join our RBI Grade B course. Subscribe it for 6 months. You will get 3 months extra subscription. Use code MADHAV in order to subscribe for 4,599 rupees. SEBI
notification is out. Again, use code MADHAV in order to enjoy a subscription for 6 months plus 3 months at 5133. And I can assure you, if you're going to join our batches, or I would say the n number of subscription models which we are offering, you are going to be in a position to clear this examination the very first attempt. Thank you so much for joining. We'll catch you in the next session. Bye bye. Take care. Good luck. God bless you.